Good afternoon, everyone, or good morning, or good evening, depending on which part of the world you're joining us. Thank you all for taking the time out to be here today. I'm Karan Muchandani, and I'm the founder of a social enterprise called Enlightened Sapiens, and I will be your host for today. So on behalf of the South Asia Bonsai Federation, I'd like to extend a very, very warm welcome to all of you here today. As you all know, SABF comprises of 5 countries: Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, and India. We have been doing so many virtual events, as you all know, and today we yet have another special program for all of you. And in order to begin, I'd like to invite our constant inspiration and driving force, like I used to say, the president of SABF, Mrs. Sneha Prasad, to say a few words and tell us a little bit more about today's event. Thank you, Karan. South Asia Bonsai Federation welcomes you all to participate in a very unique demonstration by a renowned Indian bonsai artist, Saumik Das. Today in India, bonsai history, we are showing different faces. We have made a different cult altogether in the landscaping perceptions. Future generation is showing the bonsai art through historical monuments. They are presenting haunted artistic innovations. Hope you all will enjoy. I'm sure the less said, the better it would be. What you will see, you will understand what this artist has created. Before I close it, I would like to announce 2 things. One, that we are celebrating, Digital Bonsai School is celebrating their first anniversary on the 15th of August. So we will be obliged, we will be happy if all of you participate in that. Of course, we'll put up the banners and all that. And secondly, that very day, we are going to announce the 3rd branch of Digital Bonsai School, a Suseki branch, which will be led by Sudhir Jadhav, our Secretary of SABF. So over to you, Karan. It's a long program, so I won't take much time. Once again, I welcome everybody. Thank you. Thank you so much, ma'am. Coming to today's program, as you all heard, you're going to see a unique and one-of-a-kind demonstration. And as you know from the title, it's the Haunted Bonsai Grounds by none other than Saumik Das. And I have the honor to properly introduce him to you. So let me just add him. So yes, as we all know, Saumik Das is a passionate bonsai artist and the ambassador of South Asia Bonsai Federation, North Zone, and a member of the Indian Bonsai Association, New Delhi. It has been for more than 20 years that he's been practicing this art of bonsai. He has conducted demos and workshops, both online and offline, collaborating with many bonsai clubs all over the country. He has also conducted demos on the international level. He has been a mentor to almost 500 students. That's no easy task. In 2015, he transformed his passion for bonsais into a beautiful bonsai farm, Grow Green Bonsai, where he teaches this amazing art to many learners. It is a hub for all the nature lovers and bonsai enthusiasts. He also introduced the concept of vertical benching as well as stone carving of ancient structures in India. He specializes in making penjings and loves to do rock arrangements. His creations are a blend of his out-of-the-box imagination and inspiration from natural landscape and ancient structures. Now, we all know his creations as Saumik designs. 2 of his earlier demos have been witnessed by many of us. Let's see what he has to offer for us today. It's, as we said, it's a very unique and one-of-a-kind demonstration. So stay tuned. It's a program for 1.5 hours. And today's session is very, very interactive. Saumik mentioned this so that if you have any questions or queries, which y'all may of whatever y'all have, y'all can put it in the chat box. Y'all can try it out right now, and we'll be more than happy to take these questions, and Saumik will answer them at an appropriate time. So let's begin. Good afternoon, Saumik. And yeah, I would request you to share your concept with us. I'm very excited to see what you have in store for us. Welcome everybody. Thanks, Karan, for your lovely introduction. I would also like to thank Sneha ma'am, who has given me a chance to perform a demo today. Thanks, Sudhir.
and the entire SABF team. My special thanks to all my friends and viewers who took out time, their valuable time from the busy schedule to see this demo. And as Karan has already told that I have a 500 more, near about 500 students, and this is the first time I'm giving these links to my students also. So maybe they are watching, and I welcome them also from my bottom of my heart. आप लोगों ने मेरे पहले दो डेमोज देखे हैं. सबसे पहले मैंने जो डेमो किया था तकरीबन कोई 1 साल पहले, इट इज लास्ट ईयर द सेम टाइम अगस्त, जिसमें मैंने अंकोर वाट बनाया था. एंड द फर्स्ट टाइम आई इंट्रोड्यूस, this is a picture of Angkor Wat. You can see that the first time I introduced the stone carving, and it was appreciated by most of the people. And जिन्होंने देखा है, I thank. And my second demo is again, it's a totally different from this Angkor Wat, and that is a Naijima, a volcanic island in Japan. South of Tokyo is Japan, where I use lava rocks and stones, black stone they are, and I use hand carving huts, which I create for this particular event. So they are miniature huts with make of bamboos. I create them. And now today's work. My today's work is totally different from of these previous works. So you will enjoy that. And it is something different topic. And this is an out of box. I hope I can make this the best of my abilities. आशा करता हूँ जो लोग जिन्होंने समय दिया है, अपना वैल्यूबल समय, आज सैटरडे है, वीकेंड है, एंड इट इज मिड टाइम, एवरीबडी हैज देयर ओन, आपकी सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, वी हैव टू गो समवेयर और हैव टू मेक इट प्लान. और उस वैल्यूबल टाइम में से आपने ये समय निकाल के इस डेमो को देखने के लिए आई एम रियली थैंकफुल टू दोस्त. लेट्स स्टार्ट द डेमो के साथ साथ करते जाएंगे और मजा आता रहेगा. बीच बीच में से आप क्वेश्चंस, करण ने जैसे कहा कि आप पूछ सकते हैं उनसे, एंड सुधीर इज आल्सो इन द पैनल, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस एंड टाइम टू टाइम वी विल गिव द आंसर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेमो. So I am using here a 4-feet tray, which is quite enough to explain. These are the trees, and I add some more in my conceptions. सबसे पहले इसका let's clean the tray and starting. So it has to be a long time to take this because I have to finish this then. First of all, I made these modules for this special demos. These all our modules are made, handmade by myself. So I had to arrange a platform to place that module over it. You can see this is a church which I created. It is a St. John Wilderness Church in Dharamshala. Today's topic is based on this church and something related to this church. You can see, voice is clear, everything is clear? Yes, absolutely. Yeah. I just show you the close-up. In the meantime, I add few structures to complete this on. It took me near about a month to create this, and planning जो था चल ही रहा था सर. आइडिया जो है प्लानिंग का वो चल रहा था. दिस इज अ मेन मॉन्यूमेंट चर्च जो कि मैंने बताया है, सेंट जॉन इन द विल्डरनेस ऑफ धर्मशाला. It's a very old church, near about 170 years old. Structures जो है British Portuguese structure, and this church is famous for its beautiful structures
And inside अगर आप कभी गए हैं, कोई अगर गया होगा, a beautiful glass work. That is a Belgium glass work. I add few plants to give this a realistic जो वहां पे है. वहां पे जो पेड़ हैं, it's a dense forest. Inside the dense forest, धर्मशाला जाते हुए मकलोडगंज जाते हुए ऑफ पे एक छोटा सा रास्ता कट जाता है, एक 7-8 किलोमीटर पहले लेफ्ट को, वो आपको नीचे जंगल की तरफ ले जाता है. एंड इनसाइड द डीप फॉरेस्ट यू विल सी दिस स्ट्रक्चर. एंड उसके साथ बड़े ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हैं. एंड इट्स अ डेंस फॉरेस्ट, ह्यूज ट्रीज, ब्यूटिफुल ट्रीज. So I am using today's my old plants here. This is the original picture of that image. So I inspired there. I went there and spent time. उस टाइम सोचा था कि let's do something like this. तो टाइम लगा मुझे इसे बनाने में. So I create this. Can you? The structure of the building is a stone building built. आर्कियोलॉजिकल जो आपके इसके स्ट्रक्चर्स के हिसाब से इट इज वेरी ओल्ड. एंड सो आई विल ट्राई टू पुट सम प्लांट्स हियर व्हिच आई हैव ग्रोइंग देम इन माय नर्सरी इंडिपेंडेंटली. काफी दिनों से ये पेड़ इनको अलग से चल रहे हैं, पॉट्स में हम लोग तैयार करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि इसको कहाँ पुट करें. तो शायद आज टुडे इज द राइट टाइम कि मैं इन प्लांट्स को इसके साथ पुट कर रहा हूँ. तो इससे पहले इंडिविजुअली हम लोग जब ग्रो करते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कि भी मेन स्ट्रक्चर्स हम लोग तैयार करते हैं, ब्रांचेस, टर्शियरी ब्रांचेस, रामिफिकेशन जितनी भी हैं वो सब हम तैयार करते हैं. फिर जब हम किसी लैंडस्केप के साथ उसे जोड़ते हैं तो उसकी प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू दैट लैंडस्केप और बाकी सब चीजें हम उसी के हिसाब से तैयार करते रहते हैं. आज जो चीज मैं ये बना रहा हूँ इसको तैयार होने में तकरीबन 1 साल और लगेगा. जो मैंने पहले जो बनाए थे आज वो पेड़ बिल्कुल तैयार हैं. Those who have visited my farm, they have seen that Angkor Wat, the trees are now lush, growing widely, and they are making the grips into this rocks जो मैंने उस वक्त क्रिएट किया था. This is a Chinese elm tree and it has a beautiful trunk line. So I have to use and play with this trunk line so that it fits and match with my concept design. For fixing, this is not. इंडिविजुअली मैं इन पेड़ों पे तकरीबन 8-10 साल से काम कर रहा हूँ एंड मुझे नहीं पता था ये पेड़ कहाँ जाएंगे. सो द आइडिया व्हेन इट क्लिक्ड, 1 साल पहले तकरीबन आई वेंट टू दैट प्लेस सितंबर के टाइम, गोइंग टुवर्ड्स धर्मशाला, देन आई मूव टू इट. सो आई स्पेंड few hours here. It's a beautiful place. मतलब शहर के शोरगुल से बहुत दूर शांति वाली जगह है एंड एटमॉस्फेयर इज प्लेजेंट. So those have visited there, they must know. हाईवे से हट के निकल जाता है एंड now I will add another tree because that is a dense forest. There so many plants are there. My another tree will come somewhere here. So it is fall like this. First I fix them properly, then I prune them little bit.
सेट करने के लिए। अभी soil. I am using this clay soil to fix it now. And after this demo, permanently I going to plant it again. Saumik, there's a question, if you don't mind me asking. Yeah, yes. Karan, yes. There's a question on the dimension of the church and the tray. They're asking, what is the dimension of the sculpted church as well as the sculpture church? Overall tray is 4 feet length, and it is going to 48 inches by this way, horizontally. And depth of the tray is near about 30, somewhere about 40. 36 to in between 40. And the church? Church is just measuring tape. Let me measure it, because I haven't measured before it. So actually thing is that the church and the tree should be balanced, because when you see the things in wild, nature's way, there is no one going to do this thing. It is automatically, it's nature who is making all these things. So the perfections, whatever the height. Karan, I tell you one thing. From the base, it is almost 24 inches, 2 feet height. Wow, that's one thing you have to keep in your mind. Huh? From the zoom, it looks deceptive. It's 2 feet is. I just show you the close-up. Then you see how it is look, because maybe in cameras you are not getting the actual. So one thing you have to remember, whenever you do something in this rocks or stone carving, your stones and rocks are fixed. They never have chance to grow. But your trees keep on growing. As they grow older and older, they keep on growing. So you have to regular pruning and maintain that thing. Understand? Absolutely. And what rock is being used? This is sandstones, which we use. It is a block. Ash brick blocks are available. So I cut them and carved them. So it's a single piece rock, which I cut. It took me a time. I can show you the close-up. Yeah, that would be great. Yeah. So my videos are already been posted to making those things, the preparations, the materials for my demo. It is there in the Facebook also. That preparation took me near about month, more than month, for this concept. So first of all, I have to fix these plants. It is clear now, everything? Yes, very clear. So I get. Now thing is that I have to arrange some more trees in this. So using different ages of plants, one tree will come here, and then I will add other trees. When you see the plants in the wild, and they have a massive, beautiful trunk line structure. Some trees you won't forget who is them. The question is that suddenly it erupts in your mind कि भाई इनको कौन बनाता है यार, कौन इनकी pruning करता है, कौन इनमें जिनिंग शैरी करता है, किसने ये trunk lines बनाई? It is naturally they are developed hundreds of years. So उसी हिसाब से this is the third plant is coming in this landscape. I have already prepared them in advance. Okay. I repeat, I am using Chinese alum for this concepts, because what happens in winters here in north, they shed their leaves in winters में completely leafless हो जाते हैं.
And that time you will imagine कि इसकी जो beauty होगी कितनी सुंदर दिखेगी. जब plants leaves नहीं होंगे एकदम से, defoliage पूरा हो चुका होता है इस time. It is not physically defoliage, but naturally defoliage होके leafless plants हो जाते हैं. It is the beauty of this plant. उस वक्त trunk lines, movements, branches, tertiary branches पूरी clean दिखाई देती. So I will add some thing to balance this. ये main tree है, prune करेंगे, फिर ये second tree है, little bit tilt होगा ये, like this. If you have any questions, Karan, you can ask me. I can give their answers while doing this thing. But that will be the great. Yeah. So if anyone has any questions, please put them in the chat box. Of the church, the monument. Yes. One of the viewers wants to know the width of the church, the monument. Width of the church. Yes. The height I have told you, it is near about 24 inches. And the width is somewhere 18 inches. Width 18 inches. 18 by 20. We would like to know your idea or thought process behind the placement of the monument and the trees in the tree. So what have you thought about? ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ Why- ಬರ್ತಾ make this- ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎದುರು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಬಾಗ್ಲಿದೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಅದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ My- ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. So, Sudhir, can you repeat the question? Wanted to know your idea behind placing the monument and the trees in the tree. So what have you thought while Okay, my thought. Yeah. My thought, I told you that last year, September, I went this place. So we have a weekend. So I went to Dharamshala. While reaching to Dharamshala, I just spent few hours there. And it gave me a pleasure because spellbound ho gaya tha. I just went see the thing. And then I click it here. Why not we can create is tarike ki cheezein jo hai hamare monuments hai in our designs. So Yeah, the sorry idea to got from there. I particularly want to know the thought process behind the placement in your tree. Now that you are creating this particular concept design in your tree, what have you thought behind the placement of this monument in the tree right now and the trees? How are you going to place these? If you can just explain that a little more, Okay. it will be very helpful. So placement of the tree, because I put this church on the one corner. So I can use the entire because it is just a beginning. We have a lot more things to add in this tree. So if I keep them in a center, so my left and right, both ways I have to use it. Here I have to just in corner because there's imaginations. When I see that church physically from one angle, it is there. And in left and right, both are jungles. It's wild jungles, but you can't create that such a big platform in this small tree because you have to be. It should be a movable. So I put it. It's my idea. Just put them in a one corner, and let the other objects what I want to create, the materials I have to put it on. They came all through here to this end. So it's going to be balanced. Some trees, when we put it here, they are shorter than that. When this tree will go, we will create them some at this much of height. And I reduce this tree, niche se. So proportionally, it will balance. And we will place all these things with different elements. You will come and see this. When it is complete, then you see why I choose this. Because I know that if I put it at that corner, I will have a more space in this area to put some other elements and objects, which is just related to this image. Understand? Thank you.
There's also one other question, Saumik ji, on the tools Yes. you used, the tools that you used to sculpt For the carving? church. Yes, the carving. I use some hand tools also, and I use power tools also. That's a Dremel power tools. करंट ड्रिमल फॉर्म है, उसके पावर टूल्स हैं, और मैंने अपने नॉर्मल हैंड टूल्स भी, कार्विंग टूल्स जिसको हम लोग यूज करते हैं जिनिंग शेरीज के लिए, मैंने वो भी यूज किया इसमें। मेरी वीडियोस में सारे टूल्स का एक छोटा सा वीडियो है जिसमें बनाते हुए भी है, आप लोग जाके देख सकते हैं उसको भी। अभी अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट ब्रॉट द टूल हियर, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता। It will be available on your Facebook, right? Yeah, my pictures of जो मेरा जो preparation for this demo में use हुआ है, the materials what I am using. So we have small tools, hand tools में भी काम करते हुए है, power tools भी use करते हुए है, then I use saw to cut them. Excuse me, Saumik, we have already posted that small video on all the. Yeah, exactly. That is, I'm telling to Karan that the person who's asking them, he watched that video. So he has all his answers from there. टूल्स आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी कार्विंग में यूज हो रहा है, स्टोन कार्विंग हो गया, वुड कार्विंग हो गया, एनी काइंड ऑफ टूल्स दैट यू आर अवेलेबल इन द नेट और मार्केट एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, आप उसको ले सकते हैं। Bilkul. There's just one comment. The comment is, this is for you, Saumik ji, and as well as SABF, the organizers. The whole topic and demo is so fascinating that there are no questions right now, just jaw-dropping astonishment at your creation. So we are early in the demo, but honestly, Saumik ji, it is looking very beautiful already, and I can't wait to see what all you could add to this. No, sir. You just see it till end, then you really enjoy it. पिक्चर की तरह इसे चलाते हैं, पिक्चर आप देखते रहिएगा और आपके दिमाग में ये वादियां आएंगी। I have given you idea, ये मुझे कहाँ से मिला है, धर्मशाला। It's a beautiful hill station, small hill station, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, and वहाँ का है ये, and atmosphere and the weather is excellent there. So this is again, I will plant a bigger plant here, so that leaning towards there. A movement of these plants आप देखेंगे, so it has very good trunk line and nibbari, a solid nibbari. So wild trees हैं, there are all wild trees in the natures में. Try to replicate those wild trees, but वो specimens मुझे यहाँ नहीं मिल पाए, because main thing is that in north, those plants won't survive Devdar. So I use elm trees. They are very old. The trunk line you see, the movements, and they will create. This much. These are the trees. जैसे मैंने बताया कि मेरे फार्म पे ये सब अलग अलग पॉट्स में ट्रेंड हो रहे हैं। आज इनको मौका मिला है इस डिजाइन में फिट होने के बाद। देन वी अगेन स्टार्ट, जब ये हो जाएंगे देन वी अगेन दिस, बिकॉज इंडिविजुअली प्लांट को ट्रेन करना, फिर एक कंसेप्ट डिजाइन के बाद उसको बनाना इज टोटली डिफरेंट। That's clear, Agaran? Yes, absolutely. So now I'm thinking which other plants I put them in a bag so it balanced.
I select this one. This is the perfect one. So I remove them. Karanji, Karan, Yes. why it is so silence here? Everyone is mesmerized. भाई इतना सन्नाटा क्यों है भाई? Yes, ma'am. Saumik, I have visited this place. Yeah. And I was also inspired. So I drew a small drawing. I'm sending it to Karan. He can show it on this thing. It's not a very good drawing, but I'm telling you, this place is a mesmerizing place. Everybody should go there. Yeah, ma'am. That is. Sure. Because it's half done drawing. I'm sending it to you, Karan, on your WhatsApp, if you can share it. Sure, ma'am. Just got it. I'll do it. So first, I just finish with the placement of the plants. Then I can go again. एक बार ये बन जाए. Because जो चीज हम imagine में है, जो सोच रहा हूं मैं, उसको This is the drawing that Sneha ma'am has shared. Just show me. It is not busy. Yeah. Oh, that's great, man. Yes, it is exactly like that. This is really great. Ma'am, you are very talented, madam artist, man. You have a very good hand of drawing. There are certain places that actually captivate you, and Yeah. having a book and paper is a good, always a good idea. But ma'am ne to Exactly. color paint bhi done beautifully. I stayed there for a month. Oh, that's great. I only spent 2 or 3 hours that first time and planning to go visit there because It's very near Dalai Lama's place. No? exactly Dharamshala. That is famous for its monasteries. Yeah. On way to Dharamshala, it is. On way. I know it's down. Samik, the viewer wants to know what are you using to fix the trees into the tree? What kind of system? I am right now, Sudhira, I am using clay soil. It's जैसे हमारा जो नॉर्मल मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला के तो स्टिक दैट टुगेदर. अदरवाइज प्लांट का मदर सॉइल ऑलरेडी आई एम नॉट डिस्टर्बिंग इट, तो ये मेरे पास है. दे आर ऑलरेडी गोइंग इन दिस कुंडी में दिखा देता हूँ इन माय फार्म्स. आई यूज्ड टू ग्रो माय प्लांट्स इन दिस मड की कुंडी, तो उसमें से ये सॉइल्स निकाल रहा हूँ. प्रिपरेशन से पहले लास्ट वीक व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग, तो आई कट देयर एक्सेस रूट्स व्हिच आई नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस डिजाइंस और कांसेप्ट्स के लिए. रूट को कट करके आई मेक देम अ बॉल, स्मॉल बॉल दैट इट कैन बी फिक्स्ड इन एनी प्लेस और एनी एटमॉस्फेयर. जैसे कि सुधीर, हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम इस प्लांट्स को कहाँ यूज करेंगे. नर्सरीज में तो मेरे पास नियर अबाउट 30-40 प्लांट्स स्पीशीज के अलग अलग एज के कंडीशंस के ग्रो हो रहे होते हैं. उसमें से देन आई सिलेक्ट समथिंग. जब ये दिमाग में आता है, जब मैं लास्ट ईयर वहां गया था, एंड इट इज क्लिक देयर बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया. नोबडी हैज एवर डन ऑन दोस आइडियाज में, कि मैंने कहा चलो करते हैं.
इसमें थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट्स आता है जब हम लोग सोचते हैं कि कुछ नेगेटिविटी है इसमें, क्या है क्या नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बट एन आर्टिस्ट जो है वो जब सोचता है, कोई भी आर्टिस्ट है वो अपनी एक्सपीरियंस कैसे करता है, इवन ही इज राइटर और अ पोएट, वो अपनी पोएट्री में अपनी सारी थॉट्स को डालता है। एंड बीइंग एन पेंटिंग आर्टिस्ट, आई गिव माय ऑल इमेजिनेशंस इन माय क्रिएशंस। So still now I have used 6 plants for this concept. I'm going to use another one, which has put it here in this bag. Then I place the other things. Maybe I have to chop that plant a little bit shorter. So, Samik, what is your thought behind using these plants with trunks? Any particular thought you had in mind for using these plants in this way? That is a good question, Sudhir, because my previous, जो मैंने पहले किया था, I use Ficus microcarpa. They are growing very great with rocks, and this Chinese elm, even they are very hardy plant, and they make their roots and grips into these rocks very fast. And hard plant, fast growing plants, if you cut them irregularly, कैसे भी गलत भी कट जाता है, तो again बहुत fast growing है, it heal up again. And main thing is that its leaves की जो हैं, by nature their leaves are very small. When they come into the exposed sun, तो और छोटी हो जाती हैं. And एक और बात, जो winters में they shed their leaves, पूरा leafless हो जाता है. And that time सिर्फ branches रह जाती हैं. And उस time में मैं picture इसकी shoot करूँगा. That will give you the perfect idea, because जब मैं actual scene में था, सुधीर, वहाँ पे pine trees, देवदार and they are pine. So नीचे का जो बेड है, फ्लोर बेड, दे आर फुल ऑफ फॉल ऑफ लीव्स, जो उसमें से गिरते हैं बाय नेचुरली थ्रू आउट ईयर, उसका उन्होंने वहां पे एक बेड बनाया हुआ इन वाइल्ड फॉरेस्ट में. So I think that this is the better. Used plants with curved trunk line. Curved trunk line इसलिए क्योंकि I followed other also, because इसमें क्या है ना कि it gave you the movement. Trunk lines, जो trunk, these, if I use the straight plants, दीवी है, और भी हमारे, वैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि नॉर्थ में मेरे यहाँ हम लोग स्ट्रेट प्लांट्स वेरी फ्यू हैं, जो मेन जो स्ट्रक्चर जाता है, दीवी, अपर कोलेरिया, डेकराई, दीज आर द प्लांट्स हैविंग इन स्ट्रेट फॉर्मेशंस में इजीली बनता है, पर उससे ये कैरेक्टर बनाएंगे तो उतना मजा नहीं आएगा. थिंग इज दैट जो आज मैं ये ट्रंक लाइंस जो ये टेढ़े मेढ़े जो बना रहा हूँ, इसको जो ढूंढना है, आज के 1 साल 2 साल बाद इस डिजाइन का पता लगेगा एक्चुअल में, क्योंकि ट्रीज आर ऑलरेडी, व्हेन द मूवमेंट ऑफ दोस थिंग्स इट लुक नेचुरल. बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ऐसे पेड़ मिलते हैं. अगर आप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिल्स, अगर हिल्स से आप नीचे प्लेटो की तरफ भी आ जाएं या किसी और जगह भी चले जाएं, वहां पे नेचर्स में या वाइल्ड फॉरेस्ट में देखेंगे तो देयर आर सो मेनी ट्रीज विच आर रैंडमली ग्रोन. कुछ फॉल नीचे गिर जाते हैं, वहां पे भी ग्रो हो रहे हैं. So those are the beautiful things. So spots में भी गया हूँ. I have shared pictures with Karan already. It is not कि एक जगह को inspire होके I have searched 3 and 4 other places like this. वहां से भी idea लिया है. And imaginations जो है हमने, that is why कि imaginations जो हैं वो they are endless. This, see this. इसमें भी trees हैं. They are different characters. So we have others. उसमें भी टेढ़े मेढ़े से हैं. When you think about something haunted place, वहां पे कोई भी नहीं जाता, एंड वहां के जो ट्रीज हैं आधे जमीन पे गिरे हुए हैं, वो इफेक्ट भी आता है. तो वो सारी चीजों को जोड़ के एक डिजाइन कंसेप्ट में बनाते हुए हम उसको लेते हुए इस चीजों को मैं ले चल रहा हूँ. यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? Yes, very good. Thanks for the explanation.
So here, I think the placement of the plants I have created. Because you are looking at it from far distance. When you see from this end, the floor end, then you see the trees with this monument. Close up. I will try to show you the close up from my this end, the floor end. Tray ka jo starting end hai, this. From there, when you see, I just show it from here. My son and my daughter, they are both helping me to shoot this floor ends. She put it on it. That give you the depth and details. Very beautiful, very beautiful. But from one angle, when you are seeing it from the top, you are only see the trees are there. लैंडस्केप में भी यही होता है, जब आप एक किसी एंगल से देखते हैं वहां से पूरी चीज डिटेल्स प्रॉपरली क्लियर नहीं दिखाई देती. फिर जब डीपली उसके अंदर घुस जाते हैं या डिफरेंट एंगल से लेट के बैठ के आप पिक्चर शूट करते हैं, तो वहां का जो नजरिया है, जो एंगल है, दैट इज टोटली डिफरेंट. वो एक फोटोग्राफर है जो उस एंगल से उसे खींच रहा है, वही उसको डिस्क्राइब कर सकता है. व्हाई ही सिलेक्ट दैट एंगल. So I think we are almost done with the plant section. If I required in future, I will add some few plants. It is visible and clear for everyone. Yes, very, very clear, and it's looking absolutely stunning. So any questions, boss? Sannata? There is no Sanata. There is one more comment. There is Yeah. another comment saying that though this is the beginning of the landscape creation, this looks well planned and prior vision is perfect. I appreciate your efforts, Saumik. Thank you. Thank you. But Thank there you. is also a question. What is the Yeah. material on which the two trees at the back are placed? Yeah, this Material. Yeah, where the trees are placed. The bricks. They are ash bricks. I cut them according to my own size. But it is only a platform to hold that tree here. Height-wise, the material I am fixing for the normal ground soil, जो हम अपने plants में use करते हैं as a bonsai, उसी soil से इसको fix कर रहा हूँ. And it's a clay soil है थोड़ा. आप देख सकते हैं. I can show you the close-up. This is the soil. Try to use as much as the mother soil जिसमें plant grow हो रहा होता है. Because when you are moving things, only this kind of activities can be done in this weather when it is a monsoon. Because जो भी arts and cuts कट जाएंगे, that heal very fast. Now I add few elements time to time. First of all, I make this part. ये जो दो पेड़ों के बीच में है, ये idea आया था whenever I entered in this kind of places, there is a gate. So this is the gate I made. First I place them.
It is visible, Karan. Everybody can see this. Yes, very, very visible. So now whoever has been there, उन्होंने नोट किया होगा जो ये चर्च है, दिस इज अ सेंट जॉन चर्च इन द विल्डरनेस धर्मशाला, इसके लेफ्ट और राइट में लॉट्स ऑफ ट्रीज हैं, पूरा जंगल है, बिकॉज व्हेन यू कॉल इट जंगल इट्स फुल ऑफ ट्रीज, काउंटलेस, काउंट नहीं कर सकते, बट फॉर व्हेन यू क्रिएट समथिंग ऑन द स्टेज, इसमें लिए यू मस्ट हैव समथिंग कैलकुलेशंस करके ही आप उसको बना सकते हैं। इसके दोनों तरफ जंगल है और उस जंगल में देर आर hundreds of graves. I say hundreds of graves. तो अब हम उस कंसेप्ट में आएंगे। पहला चैप्टर चर्च, देन प्लेसमेंट ऑफ द प्लांट्स, फिनिश। अब जो है थर्ड चैप्टर जाएगा जो लेफ्ट एंड राइट में जो ग्रेव यार्ड्स है, बिकॉज आप देखेंगे इट्स नियर अबाउट 7, 10, 15, yeah. These are the pictures. These are the clicks of different graveyards. वहां से मैंने आइडियाज लिए हैं। सी द ट्रीज नाउ, दे आर रैंडमली ग्रोइंग, टेढ़े मेढ़े से जा रहे हैं। सो दीज आर द आइडियाज, एक जगह का नहीं है, 2-3 चीजों का मिक्स करके आई क्रिएट दिस थिंग फ्रॉम माई ओन इमेजिनेशन। जितना से आइडियाज मिलते हैं, फिर अपना दिमाग लगाइए, अपनी इमेजिनेशन करें इसको, कि हम इसको और ब्यूटीफुल और ज्यादा डिस्क्राइब कैसे कर सके। इट इज द एंडलेस। And I have already, मैंने आपको पहले ही बताया, this place is famous for its architectural designs also. The church is very famous for its architectural design. This is a European style structures. आज से कोई 170 साल पहले ब्रिटिश के टाइम में ये बनाया गया था। So then you have to ideas, जो वहाँ का जो structure है, young भी है और European structures भी है। Everything from the fences, their lawns, their gates, everything is stones. They have carved them. और जैसा मैंने बताया कि डेंस फॉरेस्ट में है, जहां पे आफ्टर 3:30 और 4 PM सनलाइट इज नॉट इजीली रीच, बिकॉज लॉट्स ऑफ फॉरेस्ट आर देयर, पेनिट्रेट होकर सन लाइट्स नीचे पहुंचती हैं। डेंस फॉरेस्ट है और ऑलवेज इट इज एन मॉइस्चर से भरा हुआ एरिया है। हिल स्टेशन है, बारिशें होती हैं, जिसकी वजह से वहां पे मॉस, ग्रेव, ये सब अपने आप उग जाती हैं। तो उसका इफेक्ट आपके वहां के हर बिल्डिंग में, हर सराउंडिंग में, आसपास की चीजों में दिखाई देता है। So when I carve these stones, making those things, I give them that effect so that it look natural over there. Sometimes you have to cut few roots which you don't want them, so that you can get space to adjust your stone structures जो आपने बनाए हैं इस कैरेक्टर्स के लिए। So I made these hand grills. आप देख सकते हैं, these are the hand grill which I carved them and make them for this concept. So एक गैलरी है उस चर्च में जाने की।
So again, both way. Chota wala din, green wala. Yeah. So I make these fences of different size columns. I can show you what I have created here. It would be great if you can zoom into what you're placing. Yeah. I just show you the material which I made for this demo. How many are there? These are the small ones. How much time did it take you to make all this? More than a month. More than a month, Karan. स्नेह मैम से मेरी बात हुई थी तो माय डेमो वाज एक्सपेक्टेड फॉर SABF बिकॉज मैं पीछे तबीयत नहीं ठीक थी तो उस टाइम मैं नहीं कर पाया था सो मैंने कहा था मैम को कि जस्ट गिव मी सम मोर टाइम सो आई कैन प्रिपेयर द मटेरियल फॉर दैट डेमो मैम ने कहा था कोई बात नहीं बेटा जब हो जाए तो करना तो मेरे ख्याल से कोई लास्ट मंथ इट इज इन जुलाई फर्स्ट में शायद मेरी बात हुई थी या उससे पहले था Yeah, तो मैंने कहा मैम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई फर्स्ट ऑफ वीक जुलाई रिमेम्बर यू मैम तो मैंने कहा चलो लेट्स डू इट मैडम तो उस वक्त दिमाग में नहीं था कि कैसे करना है इसको सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट उस वक्त दिमाग फिर चलने लगा बिकॉज आइडिया तो था जब मैं वहां गया था बनाना है ये सब चीजें प्लांट्स मेरे रखे हुए थे क्या प्लांट्स आएंगे क्या नहीं आएंगे मुझे कुछ नहीं पता था बस मैम को कह दिया और उस दिन से दिमाग चलने लगा यू करंट वोंट बिलीव फॉर लास्ट 15 days ऑल द ग्रेवयार्ड व्हिच आई हैव सर्च वो मेरे दिमाग में आता है रात को रियली मैम घूमता रहता है आंख बंद करता हूँ ना वही ग्रेवयार्ड्स घूमते रहते तो बहुत सारी स्टोरीज जुड़ी हुई है इनके साथ मेहनत तो है 1 month to create these materials. टाइम टू टाइम सो ये चीजें जो आपकी क्रिएशंस है व्हाट यू वांट यू कांट गेट देम इन अ मार्केट These are called onyx design. You gave me a name, Onyx. Yeah. Saumik designs man. अब ये जो एक फेंस हो गया now you can see the close up कि how these grills and gate the placement of the trees the most of the trees are inside that graveyard just अभी now let's begin with the main concept. You remember there is a two part left and right. Right में वहां पे कुछ monuments हैं. जैसे कि मैंने बताया that this church was built in 1852, almost 170 years old, and it is the most popular. Mostly the people visited there on Sundays, weekends में Saturday Sunday लोग आते हैं, and they try to spend their time there. Next. Soil. For soil बना. Now I am putting that soil there. Gold.
और बना लो। There's a comment on the chat box saying it was made in 1852 and then now again in 2022. Thanks to you. One interesting question क्या हुआ था अभी, one of my student, he was so fascinated about that Angkor Wat, he sees that, and फिर दोबारा वो he joined my second batch also. तो उसमें उसने कहा कि सर I am so fascinated that I book a ticket for Cambodia to see this Angkor Wat. मैंने कहा that's a great. This is the type of comment what you receive from your students or anyone, that work कि जो आप बना रहे हो, it is there. बिल्कुल, अभी सेंट जॉन चर्च में अभी भीड़ लगने वाली है सर. So now there is a grave. एक मजे की बात करण मैं आपको बताता हूँ. जब मैं चर्च में बैठा था तो मुझे पता नहीं था कि इसके लेफ्ट और राइट में ग्रेव है, ग्रेवयार्ड है. तो आई वॉक थ्रू दैट जंगल. इट वाज अ वेरी साइलेंट पीस. ऊपर से एक रोड है जहाँ से बस जाती है, एंड अदरवाइज ऑल द टाइम यू कैन फाउंड चिड़ियों की चहचहाने की आवाज पूरे जंगल में होती है. धीरे धीरे करता करता मैं अंदर चला गया. देन आई फाउंड फ्यू ग्रेव्स जो वहां पे थे. तो आई रियलाइज यार ये कहाँ आ गया मैं. फिर मेरे को क्यूरियोसिटी इतनी थी कि लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट मोर आई कैन सी. तो वहां पे एक इंटरेस्टिंग एक छोटा सा बोर्ड था. यू वोंट बिलीव, उस बोर्ड में ये लिखा हुआ था कि कभी हमारे साथ भी समय बिता लिया करो. एंड आई जस्ट सरप्राइज्ड यार, कंसेप्ट ही चेंज हो गया कि यार concept totally changed. Who? So then I realized, यार who are there? ये इतने सारे जो हैं, there is uncountable graves हैं. किसके हैं, कौन है? तो संडेज को क्या है कि बहुत सारे लोग जिनके वो रिश्तेदार हैं या रिलेटिव्स, दे कम देयर एंड दे प्रे फॉर. तो एक जो वो होता है ना, अभी और चाहिए बेटा. कप्स का तेरा दो. मिट्टी. This is the third part. पहले में हम लोगों ने स्टोन स्ट्रक्चर सेट किए, देन ट्रीज. नाउ आई एम पुटिंग द ग्रेव. तो हंड्रेड्स ऑफ ग्रेव्स इधर उधर सब गिरे पड़े थे. और उसका ये तो इतने पुराने थे, उसके ऊपर तो नाम तक मिट चुके थे. एंड समवेयर आई फाउंड सम डेट्स आर देयर, 1870, 1820, ऑल सब उसी टाइम के थे. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस.
they're mostly जो जितने graves हैं, they are under the shade of the trees, so that the person may rest in peace and always in shade. और कई जगहों पे बहुत अभी एक जगह और मैं इस कंसेप्ट को करने के लिए तो आई जैसे मैंने आपको बताया करण कि आई विजिटेड मेनी प्लेसेस मेनी ग्रेव्स. आप हंसेंगे, एक जगह लिखा हुआ था कि भी पहले से ही एडवांस बुकिंग करा लो. वहां पे भी करता है. हाँ हाँ वही लाइन है. सर आप जब भी सौमिक जी when you read the chat box ना आप थक जाओगे, इतने पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं ऑलरेडी. Thanks very much. नहीं मैं नहीं, everyone else is saying such good words, so I'll send this to you, but a few things people have mentioned so much hard work and excellent detailing, beautiful creation with church and graveyard and natural looking trees, many more. So I would urge you to, after this session also, to go through the chat. Definitely. There's a question on how did you make the iron fence? Iron fence. I cut them and wires and fix them. These are the stones which I bonsai wires. And there are some GI wires also. If you want something hard, so GI wire also you can use them. इस fence में भी you see the grooves. उसी era के में some are different sizes. Some Saumik Das, very realistic, very yes. realistic. बहुत मेहनत की. Ma'am, what आप जो कर रहे हैं, that is really an outstanding. You are promoting Indian artist. आप ये देख सकते हैं कि आर्ट की कमी नहीं है इंडिया में मैडम. बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, but they need a platform to show their presence, what they are creating. And you are taking them out to giving them a platform to show, and the new generations who are keen to learn this art, they can have the views कि imaginations and creations की कमी नहीं है. Landscape is not कि पहाड़ भी हो गए ठीक है,
Everything should it be a negative or a positive, that be a part of a beautiful artist जो उसे create करता है कि उसको किस खूबसूरती से हाथ दिखाए. मेरे ख्याल से ग्रेवयार्ड और ये cemeteries, it is not an easy topic. मेरे ख्याल से बहुत कम लोग इस पे सोचते हैं. जब मैं वहां गया तभी से मेरे दिमाग में ये घूम रहा था कि इसको मैं कैसे करूंगा, and I am searching materials for that. I will tell you. आप बोल रहे थे ना पिक्चर जैसे अनवील होगा. किसने कमेंट में भी लिखा है 3D पिक्चर हो गया. अभी 3D का कोई पॉगल्स के बगैर. This is unbelievable. Everyone is this is honestly Saumik ji, this is like someone's written they are spellbound. I am spellbound by here that वो board कि कभी हमारे साथ भी वक्त बिताया करो. So really it's पहले तो डर लग रहा था कि यार जब पता लगा कि यार कहाँ पे हूँ, so I just एक बार मन आया कि नहीं यार निकलते हैं यहाँ से. फिर रियलाइज हुआ बोर्ड पड़ा, मैंने कहा नहीं, समथिंग इज कॉलिंग मी, बॉस आओ बैठो. Are you counting the graves? नो मैम, अनकाउंटेबल. काउंट करके नहीं बना सकता. वहां पे भी अनकाउंटेबल्स हैं, कुछ यहाँ हैं कुछ वहां, स्टैटेड ऑल ओवर द प्लेसेस. मैंने तो मैडम काउंट भी नहीं किया कितने बनाए थे ये ग्रेव्स. और ये बिकॉज यू बिलीव. यस सॉरी. यस करण, आज क्या पूछ रहे हैं? मेरा खुद का क्वेश्चन था, लाइक आप इतने फेंसेस और ये सब आपने बनाए हैं, तो ये कॉम्पोजिशन का मैथ्स आपने पहले किया रहेगा कि इतने लगेंगे ये डायमेंशंस के लिए? जस्ट डायमेंशन नापा, बनाते गए तो आई ऑलवेज क्रिएट एक्सेस. 15-20 और अभी फालतू हैं, ग्रेव्स भी फालतू हैं. एडवांस बुकिंग हो गई ना सबों की. So now some of those graves जो हैं जिसमें you can't barely, they are just covered with moss and grass and grey with their ages. Saumik Das, I want your permission to use this and that Angurvat thing in my video. Definitely, ma'am. You have right. You don't ask permission, give order. कि Saumik बनाना है तो बनाना है. And you help me in that. So, Saumik, one question for you. Yeah. From me. How do you decide the proportion, I mean, the ratio of the smaller artists, I mean, the fence or the cave that you have used in comparison with the main monument, that is the church? So what rule do you use to measure or create the ratio when you make these, when you carve this? I have different sizes of graves. You can see the small ones, then cross, then little bit a bigger one. And anything which is far from a distance you were looking, those are the small ones there. When you see in from the distance things. Closer one, church के पास जो थे थोड़े बड़े हैं, कुछ ऐसे हैं कि they are very big because maybe those persons are very famous. शायद उनका grave थोड़ा बड़ा है. And they have lot of writing उसमें. But problem क्या है कि it is 150 centuries हो गई उन graves को किए हुए, और उसमें weather वहाँ का ऐसा है कि everything is covered and layered with the grass and the moss, and it is not visibility, आप उसको देख नहीं सकते, cracks भी आ गए. अब इतने समय का जो वो है उससे वो चीजों का छुप गई हैं.
सो मेजरमेंट जो है आपकी वो यू कांट डिस्क्राइब, जो मैंने पहले कहा था, इट इज नियर अबाउट 7-15 किलोमीटर्स से में फैला हुआ है. सो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग इन द ट्रे, तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनल द थिंग्स. इफ यू आर लुकिंग फॉर द चर्च, उसके पास बड़ी है. व्हेन यू थिंक फार, थोड़ी सी छोटी है. कुछ उसमें कुछ बड़े भी हैं जो काफी दूर तक हैं, स्ट्रैटर्ड हैं. एंड दे आर नॉट मेजरिंग की भी उस टाइम 1850 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम कोई शायद इन्होंने ग्राउंड भी मेजर नहीं किया होगा कि यहाँ पे इस ग्रेव को जगह दे, यहाँ पे इस ग्रेव को. इट इज रैंडमली वेयर दे फाउंड अ स्पेस, दे पुट द ग्रेव्स देयर. मुझे जहां तक लगता है अब थोड़ा सिस्टमेटिकली हो गया है, बिकॉज वी हैव लैक ऑफ प्लेस इन द ग्रेव्स आल्सो. तो इसीलिए शायद बोर्ड्स में पहले ही लिख लेते हैं कि मेक योर एडवांस बुकिंग. This is a poetry, not prose. You can't define it. No, ma'am. Yes, really. It is imaginations. छोटा बड़ा, अगर मैं उसी में करता रहूं कि ये इतना छोटा चाहिए, इतना बड़ा चाहिए, शायद मैं आगे इसको शायद बना ना पाऊं. There is a question from our viewer. Should all the plants be of the same species when you create a tray like this? Yeah, it should be a same. Because reason that क्या है कि अगर एक ही species के होंगे, their growing, their habit, their shedding leaves एक जैसा ही रहेगा. वो एक बैलेंस है इन लैंडस्केप में. पर कई बार मैम मुझे भी लगता है कि वी कैन यूज डिफरेंट वेराइटीज, बिकॉज व्हेन वी सी इन नेचर, मे बी आई एम रॉन्ग, पर दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है, कभी मेरे को था कि आपसे भी पूछूंगा कि जब लैंडस्केप में नेचर ने कोई उसका भेदभाव नहीं रखा. एक बड़ा लैंडस्केप हम देखते हैं, कहीं छोटा पेड़ है, कहीं फ्लावर्स है, कहीं कुछ है, वो हम अपने इसमें तो यूज करता हूँ मैं मॉस और ग्रास, पर ट्रीज भी डिफरेंट दिखाई देते हैं. कैन वी यूज देम? Since it is my question also, ma'am. Yes. Why not? Penjing is not, landscape is not controlled by us. It is controlled by the demography, you know. घास भी होगा, फूस भी होगा, bushes भी होंगी, पेड़ भी होंगे, seeds भी flow करके आएंगे, वो भी उगाएंगे, पानी भी होगा, पत्थर भी होंगे. So it is not calculated. कोई calculation नहीं है उसमें. That's what I'm saying. It's like a poetry. It has to flow out. I found some graves गिरे पड़े हैं, कोई है ही नहीं उनको ठीक करने वाला. बट इसी एक जगह में गया था, एंड दे केम, वो उनकी फैमिली के शायद उनके रिलेशंस में किसी का होगा, दे क्लीन दैट प्लेस, फिर उन्होंने पेंट किया उस ग्रेव पे, कुछ फूल रखे, एंड दे लीव ऑन. सो दैट गिव मी अ पॉजिटिव सेंस कि नहीं यार, अगर ये लोग आ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं. इट इज अ प्लेस, एंड इट मोस्ट ऑफ दोज ग्रेव्स आर नेक्स्ट टू एनी काइंड ऑफ मोन्यूमेंट. इधर इट इज मंदिर हो, चर्च हो, या गुरुद्वारा हो, या आपके मस्जिद हो, उनके आसपास ही दिखाई देती है. मिलिट्री हॉस्पिटल के पास भी दिखाई देते हैं. हाँ मैम. और हमारे इस हिल्स में, नॉर्थ की हिल्स में आप देखेंगे जितने ब्रिटिश टाइम के एराज हैं, अब शिमला से आप थोड़ा सा और दूर चले जाएंगे, एक जगह थानेदार है, एंड दैट इज फेमस फॉर इट एप्पल ऑर्चर्ड. उसके पास भी एक बहुत पुराना चर्च है, एंड दैट इज अगेन द ब्रिटिश एराज चर्च. उसके कंस्ट्रक्शंस और उसके जो मॉन्यूमेंट्स के बनाने का तरीका है, उसी से पता लग जाता है. ये आर्किटेक्चरल जो डिजाइन्स हैं, ये उसी एरा में ही आए थे. अब जैसे जैसे हम मॉडर्न हो गए हैं, मॉडर्नाइजेशन आ गया है हमारे इसमें, तो आवर स्ट्रक्चर्स जो है वो चेंज हो गए हैं. आर्किटेक्चरल टेक्सचर्स में बहुत ज्यादा चेंज आया है, जिस तरीके से वो चीजें चलती है. Saumik, can your camera show from the top of the landscape? Yeah, top. I will try it. You just show it from the top. This much of height. Yeah. I will try to show some a little bit height of the 6 feet or 7 feet. Height. Can you see, ma'am? Yeah. Can the camera stand on the chair and then look down on the tray? Okay, I will do it then. I will do it. So that means you want the aerial view. Yeah, aerial view.
bird eye view. Can you Yeah. see this? Yeah, so It beautiful. is incomplete now. Yeah, We are now is going to be in a final stage. right. You can see. Yeah, yeah. Thank you. Thank you. So maybe the camera shake hoga because we are moving it by hand. No, no, that's fine. We can see. जो भी कैमरा दिखा रहा बहुत अच्छा दिखा रहा है. She is my daughter, ma'am. They help me. वो lights, These are the lamps. lamps. It's glow. Wow. So I will let them glow. अभी बन जाएगा. उसके बाद Yeah. एक फाइनल टच दिखाएंगे. पिक्चर अभी बाकी है मैम. Yes, yes. Still more to come. You're full of surprises. दाना का है. Too much. I will make a path. I make this small footpath. आप देखो ना पहाड़ों पे अब जाओगे छोटे छोटे फुटपाथ्स होते हैं.
Now I add some little. सौमिक, तुम्हारे ग्रेवयार्ड की टेबल भी दिखाओ ना, कितने खाली हो गए. हाँ हाँ, इसमें दिखा सकते हैं. You can show this what I left. So how much extra I have to create. Thank you. Even you can create this thing with your dead woods. जो पेड़ हमारे dead plants जो हमारे मर जाते हैं, I have kept. पहले मैं सोच रहा था कि मैं उससे बनाता हूँ. I have kept few. I can show you. These are the plants, the same characters of plants which dead. So I try. I'm thinking मैं इसको भी बना सकता था. But मैंने कहा नहीं, लाइफ पैटर्न से बनाते हैं, मुझे बहुत सारे पेड़ मारने पड़ेंगे इसके लिए. So I dropped that idea. These are the few wild weeds जो वहाँ पे graveyards में उग जाती हैं. Any questions, Karan? Questions, sir. हम लोग सब सौमिक जी दिया, like completely mesmerized. My question would be is just unbelievable. It's आप बोल रहे थे ना पिक्चर देखा बाकी है, ये तो मेरा हाँ, पिक्चर अभी बाकी है. पर सर ये मेरा ऑलरेडी फेवरेट पिक्चर हो गया. थैंक यू सर. किसी ने पूछा भी इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा कि कैन वी सी इट अगेन, वो ये सबका फेवरेट पिक्चर हो जाएगा ये. Not able to take our eyes off it.
चलिए वर्थ इट रहा. I have a personal question. How would you transport this tray? Like it seems heavy and Yeah, so it's delicate. good. Boss, I took it in my car, back seat में रख के लेके आया हूँ. And then this plants. 3-4 शिफ्टिंग में सामान आया है. और अगर And- इसको शिफ्ट करना होगा तो हार्ट ब्रेक ये है कि इन द मॉर्निंग आई हैव टू सबको हटाना पड़ेगा धीरे धीरे करके. देन फिर मैं अपने फार्म पे ले जाऊंगा, फिर इसकी जगह बनाऊंगा, देन फिर इसको दोबारा से रीसेट करूंगा. My Oh my goodness. Oh my God. Yes, ma'am. All my creations, even my Angkor Wat, I keep it at least for 3 months as it is. रखा ही नहीं हुआ था. फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसको करता हूँ. टाइम मिला सुटेबल, तो आई जस्ट, यू वोंट बिलीव कि इस वक्त मैडम उसके प्लांट्स कैसे हैं. जो अभी रिसेंटली जो मेरे फार्म पे आए हैं, दे कैन टेल यू हाउ ग्रोइंग दोस थिंग्स. सौमिक, अभी तो जो भी बोलोगे हम मान जाएंगे. नहीं मैडम, रियली आप पूछो किसी से. आई थिंक रिसेंटली वीर आया था मेरे फार्म पे. इफ ही इज वाचिंग दिस, ही कैन टेल यू. Yeah, he's here. He's here. Very, very beautiful. It's coming out so alive. Ma'am, I'd been to Saumik's farm and it was the Oh, Angkor Veer, Wat hi, was Veer. amazing the way it has developed. Hi Veer. Hi Samik. You're doing such a wonderful job. Thanks, brother. Guys are lucky. You people can do it, you know. Very lucky. And thanks, ma'am, also. You are giving us the platform. Not the platform, you will get it anywhere. But you people can. Wow. रवि, ये तीनों कैसे लगेंगे? क्या अभी नीचे ऑन कर लो जरा. इफेक्ट देते हैं. मैम, आई एम ऑलमोस्ट डन. एनी सजेशंस फ्रॉम मैम योर साइड? That's perfect. It's perfect. अब आप लाइट जला दो जो आप हमको दिखाने वाले हैं. हाँ, अच्छा, बाकी लाइट्स बंद करते हैं. एसी बंद करना. एसी
see. So now there is climax. वहां पे वेदर में मिस्ट बनता है, फॉग. Hmm. आपने कितने पेड़ यूज किए टोटल? 7. 7. Now these lamps are green. Beautiful Samik, lovely creation. Guys, this is Saumik Designs. Saumik Designs. This is a new cult we have started in India. Saumik Designs. Now you can have a 360-degree angle view with less light. हमको तुम्हारा वेजिटेशन देखना, जो तुमने घास फूस लगाया ना, उधर I will दिखाओ. give you the close-up look. Close-up look दिखाता हूँ. हाँ. It's a wild weed which is growing in my farm, and I use moss also, some grass also there. Hmm. Extension. Now give us a far off look. Far off look. दूर से दिखाओ थोड़ा हमको, 4-5 फुट दूर से. अच्छा, थोड़ा सा दूर से नीचे दिखाना. हाँ, ये लाइट वाइट जला रहने दो और दूर से दिखाओ कैसा दिखता है, कैसा भूत बंगला दिखता दूर से ऐसा. पानी देना. Very authentic Saumik Das. I wouldn't like to go into this church at all. I'm sure of that. You have already been there, na ma'am? I've been there. I've stayed in Palanpur for 1 month. I used to go daily to Dalai Lama's teachings, there. So I've visited this place. This is the final look, ma'am. Very beautiful. Very, very, very. आपने जैसा दिखता उससे भी सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर. Thank you so much, ma'am. Yeah.
Now you can see the trees which are tede mede ja rahe hain, they have a better effect. Yeah. They are matched with these designs now. And Karan had put a very beautiful soothing music according to this system. That पानी देखियो साफ पानी नीरजा Saumik, यस मैम हमको यस मैम अभी आप क्लोजअप मत दिखाओ, अभी आप हमको लेफ्ट से दिखाओ, राइट से दिखाओ, बैक से दिखाओ, हमको सब back तरफ se and I put it from the left, from right, and something from the back. Yes. Yeah. Now, just not close up. We want to see it as a whole. okay. It looked like this from one angle. Yeah. Now I'm moving towards front. थोड़ा कैमरा दूर रखो, पानी पानी कैमरा को दूर रखो, थोड़ा डेप्थ दो थोड़ा. हाँ. Now you can see the entire. Yeah. Now I'm moving to this part. Right. सौमिक जी कमेंट्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसके बाद, आपको इतना तारीफ मिल रहा है. I don't know what to say, but एक मस्त कमेंट्स आ रहे हैं. Alfred Hitchcock must be watching this new location. Transformed to a different world, amazingly beautiful creation. Saumik, don't This is- worry about the fog. Don't put your hand inside. It will come in Okay, the- ma'am. Okay. This is back. What you are looking, this is Yeah. from the back. Right. So those are trees. This is the back gate. And you can see through this inside. Yeah. कैमरे को दूर रखो. Give the depth. Give the depth. Isometric view. Isometric view. And this is the aerial view if you're looking from the top. Absolutely gorgeous. Absolutely gorgeous. Well done. सौमिक, इसको नाम क्या देंगे? वो अंगूर वाटना, ये क्या है? आप बताओ मैम इसको. let the viewer select. They just put them in a chat box. क्या नाम अच्छा लग सकता है? हमने तो हॉन्टेड ग्राउंड ही दिया था, हमको वही अच्छा लगा. ठीक है. Haunted ground. St. John Church in the wilderness, haunted ground. ऐसा है कि ये आपका कंसेप्शन है, वहां से आपने देख के बनाया. आपने हॉन्टेड ग्राउंड का एक नया ही डायरेक्शन दे दिया ना लैंडस्केप में. आज तक किसी ने किया ही नहीं किया. मैं मुझे आप मेरे से ज्यादा आप देख रहे हैं because I am new in this field for साथ. So it is something different because nobody has selected this subject. somebody has given scary sillyhood. बहुत अच्छा लिखा. किसने लिखा है? देखो तो किसने दिया है? Suchitra Satish Kumar. Yeah, Okay. that's very nice. Very nice. I think Very realistic. हम लोग का टाइम हो गया है क्या? Yes. 4:45, ma'am. It is near about. So I make the light on. Light on करते. Put on the lights and Sudhir can take over now.
AC. Yes. So as you can see, Saumik ji, we all need to take a Lights. breather. Yeah. We all need to take a breather because ये movie पे हम लोग के तो सांस ही रुक गए. But it has been really honestly something I personally have never witnessed, and it feels like I saw the creation. You know, जब वो Da Vinci काम करता है, उनको work करते वक्त, so it's nice to see. It's a very original artwork, and I feel honored to be part of today's session. Thanks to you, and of course, thanks to SABF. And to give the vote of thanks, we have none other than Mr. Sudhir Jadhav, the Secretary of SABF. You all know Sudhir, a little bit more about him. He has set up Bonsai Euphoria Design Bonsai Studio at Kajjar, and has been recently awarded the Sasya Bandhu Award for his work in bonsai. Good afternoon, Sudhir. Hi, Karan. Thank you very much. Right. South Asia Bonsai Federation would like to take this opportunity to thank Saumik Das, the SABF Bonsai Ambassador for the Northern region, for this wonderful demonstration. Saumik, I have no words to express my feelings. It's such a mesmerizing landscape that you created today for all of us. Thank you very much for this informative and a very engaging program. Thanks are due to Saumik's staff members, his son and his daughter Neelja, for helping him today, and also making this show possible for SABF. Thank you. Thank this you. program would not have been successful without the participation of our overseas and national viewers today. We thank all of you for your keen interest and your time. I would also like to take this opportunity to thank Mrs. Sneha Prasad, President of South Asia Bonsai Federation and Director of WBFF, for thinking about such a wonderful team and demonstration, and helping Saumik to come forward and make this happen. Thank you, ma'am. And my vote of thanks wouldn't be complete without thanking Enlightened Sapiens. Thanks a lot, Karan and your team. So you all have Thank a you, good Sudhir. evening and goodbye. You all have a good evening and goodbye till we meet again. Thank you so much. Thank you. Thank you, Karan. Thank you, Sudhir. Thank you, ma'am. Saumik, Thank can we you. see your son and daughter, or are they gone? Yes, ma'am. They are with me. You please come. Let Just them give me. Let's please come. Yeah. Very beautiful. Anurag, please come, beta. Oh, it's nothing. It's okay. Yes, she is Thank my you, daughter. thank you, She is kids. daughter. You people have done a great job. Thank you so much. Thank He's you. my son. He's my Okay. son, Anurag. Well, he is And going they to are my be taller daughter. than you. And, Yes, ma'am. They help me lots in this. So yeah, great job, Chip. Great job. बहुत अच्छा किया. आज का वीडियो सब इन्होंने ही बनाया. I am just placing the things and the angle where they are showing. Yeah. And Thank you very much. Thanks. thank you. Thanks to the Bye, entire bye, master. everybody. Bye. Bye, everybody. Thanks. Thank you, everyone. Thank you, everyone. I'll see you all again. And Karan, send me the recordings too. It'll be done. And I will just Everyone revert wants to back see those. it. Everyone Yeah, wants to every- see it again. And give me the chat also so that I can report back to them also. And thanks all the viewers who just still wait up to this time. It is not going to be a 5 होने वाले हैं, 10 minute है. It's more or less 2 hours. So give me your valuable time. I will thank you. I think that you will like these things. अच्छा लगा है तो you just give us the comments on the Facebook and my WhatsApp. Anywhere. Thanks a lot. And I will try to do something different in my coming time. Thank you. Bye. Bye. Bye, everybody. Take care. Have a good day. Don't blame the soul today if you're not able to sleep peacefully. Should I say, okay, now I am just having a dream for last 15 days of those graves जहाँ जहाँ मैंने visit किए वो मेरे सपनों में आते हैं. Let's see. Have a peace. Sleep peacefully today. Yes. Yeah. Thank you. Goodbye. Bye. Bye, everybody. It's clear.